My voice is audible, clear to all of you, online students. Yes, sir. Good evening, sir. Uh, So, okay. Achha, before I start, see, Odisha module, किछटा basic जिनिस आपको कहबे जोटा कि expectation रहइबो. Okay. It actually details theory class नु. Okay. जोटा कि मु आगु जेंति नेथिबी सेटा ଆମେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଠି ଏକ୍ସାମ ସ୍ପେସିଫିକ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର କେତେଟା ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି ଓକେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ପଢାବ ତେଣୁ and you have to ଆପଣଙ୍କୁ ରନିଂ ନୋଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି I will dictate the answers ତା ଭିତରୁ important keywords କୋଉଟା ସେଇଟା କହିବି underline କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ by the end of this particular module ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ ନୋଟ୍ସ ଟା ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ ठीक है now as compared to the printed notes आपनकर 15 तारिख रे printed notes रो जो माने जॉइन करछन मिलि दिबो ओडिसा मॉड्यूल रो ता कंपैरिजन रे जहां मो डाकिबी सेटा टिके अलगा थि ओके तो आपण पाखे दीटा रहिबे एटा क्लास नोट ता फॉलो करिबे टिके बेटर रहि ओके कंपैरेटिव अच्छा फर्स्ट लेट अस कम टू द सिलेबस पार्ट ओके सिलेबस रे आपण जदि देखिबे in each paper ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶାର ଓକେ components ରହିଛି in each paper ସବୁ paper ରେ ସେଟା ରହିଛି paper 1 ରେ ତ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଅଛି ଓକେ 2 3 ରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି paper 4 ରେ जीएस କଥା କହୁଛି जीएस paper 4 ରେ ethics ରେ ସେଠି administrative ethics ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି examples ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ ଓକେ ता सेटा तो जेनेरिक है ता ऊपर ओडिशा स्पेसिफिक तथा भी मु एक्सपेक्ट करिवि किछटा क्वेश्चन से माने रिलेटेड टू ओडिशा पकेइबे एथिक्स रे भी ठीक है एथिक्स रे भी तेनो सेटा अपन को देखि कि तार भी किछटा हम डिस्कस कर दो एग्जांपल्स करी ओके सो लेट मी जस्ट प्रोजेक्ट द सिलेबस and then you will start with the class तो इतने कौन ना टिके अपन को जल्दी जल्दी लिखिवा पे पड़िबो you have to write टिके जल्दी अपन लिखिबे ओके सेटा गोटे जिंस अपन को मन रखिबे तो ए पार्ट के देखो आपनकर इनिशियल पार्ट हुआ these are all हमें यूथ भी स्टार्ट करिवे ओके दैट इज हेरिटेज एंड कल्चर एटी जो से कहूची इंडियन कल्चर कवरिंग salient aspect of art forms literature architecture from ancient modern times तो इंडिया रा अलग मॉडल को कवर होबो ओडिसा रे भी सेम दिन कि आज हमें कोन देखिबा ना स्कल्पचर्स ओके sculptural art forms जोड़ा रहला ठीक है major temples except the the Kalingan temples kana सेटा अलगा सेगमेंट अछि सेकंड सेगमेंट ओके आज हमें पेंटिंग्स मेनली आज हमें कलिंगन पेंटिंग्स जोड़ा देखिबा कि ओडिसा पेंटिंग्स देखिबा तो आर्ट फॉर्म रे आपन विजुअल आर्ट आछि ठीक अछि परफॉर्मिंग आर्ट्स भी आछि तो फाइन आर्ट्स भी आछि राइट सबुरा टिके टिके देखिबार अछि माने ईच आर्ट फॉर्म रो धरन कोटे के दुटा क्वेश्चन टैक्स या पढ़ी पारे आउ सेटार एग्जैक्ट आंसर कोन ओके तो एटा गोटे रहला टेंपल आर्किटेक्चर वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स इन द थ्योरी क्लास एटा relatively कम तार अबाउट डिफाइंड एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस अछि 8 और 10 टा क्वेश्चन भीतर सॉल्व सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इन ओडिशा Bhakti movement in Odisha and impact on society of Odisha. Okay.
evolution and growth of Odia language and Odia literature. Okay, এই দুটা বহুত important parts. তার সবু না various stages আছে কি phases আছে যুগ সব আছে right literature how language ro development each stage रे किए major contributors ଥିଲେ कौन तांकर major contributions थिला each stage रो characteristic कौन for example Odia literature कथा में कहला तो रीति जुग तार characteristics कौन okay तापर आसीगला traditions of Odisha okay अच्छा first let me start आज हमें जहाँ पढ़िबा तो ये जो आर सोर्स कौन कोठो हमें पढ़ि पारि तो मेनली दी तीनटा सोर्स अछि कल्चर ऑफ हेरिटेज स्टार्ट करू एनबीटी रो गोटे बुक अछि नेशनल बुक ट्रस्ट रो कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ ओडिशा दैट इज गुड प्लस किछि एस्पेक्ट्स अपना हरिहर पंडा सर को बुक भी देखि परिबे आउ किछि एस्पेक्ट्स अपना आउ गोटे बुक भी अछि गोटे डीडीसी रो बुक ता सेटा भी से हरिहर पंडा सर को बुक रो बेसिकली तार समरी ता एग्जीक्यूटिव समरी टाइप सेटा भी आपण देखि परिबे ओके बट नोट्स रे कंबाइन कराई जे सब गुडा तो बेसिकली जोटा मु डिक्टेट करिवि क्लास नोट रे सेटा आउ आपण किछि दरकार हो ओके देन हिस्ट्री भीतर सेम अगेन सेम जिंसो ए जेते जहा जहा सब देछि एतरे ओडिसा एस्पेक्ट्स हम देखियो पर्टिकुलरली तो कहि देछि आपण ओडिसा कलिंगा वॉर ओके खारबेल एटा बोत्र पडिछि डायनास्टिक हिस्ट्री रो अलगा डायनास्टीज इंक्लूड करिछि भौमकर सोमवंशी गंगा गजपति जो टेस्ट सीरीज जो मान दोचंदी ऑलरेडी आर टेस्ट करिका तो सितर अपन देखितरे क्वेश्चन तापर आसी गला फ्रीडम स्ट्रगल पार्टी रेजिस्टेंस मूवमेंट इन ओडिशा पाइकर रेबेलियन वीर सुरेंद्र साई चौहान डायनेस्टी ऑफ संबलपुर रिवोल्ट ऑफ 1857 80 कोन हितला ओके बहुत गुडे हमर एठी हीरोज अछंती जहां ना भी हमें सुनी फॉर एग्जांपल हमें सेतबल देखिबा कि वीर सुरेंद्र साई को हेल्प बहुत जण करते ठीक अछि तांको भितरु यू नो मेनी जमींदार्स आर आल्सो ओके एंड बिकॉज ऑफ द हेल्प से माने आगु को जाई ब्रिटिश वाला बहुत फायदा तापर आसला क्रिएशन ऑफ ओडिशा प्रोविंस तो को ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स एतरे बेसिकली इन्वॉल्व थे ओडिशा यूनियन है उत्कल सम्मेलन जोटी ओके एंड अदर्स आल्सो फ्रीडम मूवमेंट एंड प्रजामंडल मूवमेंट्स इन ओडिशा सोशल बेसिस ऑफ ओडिया नेशनलिज्म ओके मेन बेस्ड तो ऑब्वियसली लैंग्वेज रहला बट लैंग्वेज छोड़ा अलगा कोन सोशल बेसिस ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ 26 स्टेट्स इन ओडिशा मयूरभंज हे गला ओके कनिका हे गला बहुत गुडे 26 स्टेट थे समस्त अलग अलग स्टोरी राइट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन ओडिशा अवश्य एठी हैदराबाद की जूनागढ़ वाली अवस्था है नहीं बट देयर वर सर्टेन प्रिंसली स्टेट्स इन ओडिशा जो माने कि इंडिया रे मिसिया भी चाउनट दे हैड देयर डिफरेंट रीजंस टिके टिके ता विषय रे देखिया अछि ये फर्स्ट पार्ट है वाला तापर ज्योग्राफी आसीला तो ज्योग्राफी रो बेसिकली ऐड किछि हेई एगुडा आगुरी के थिला सिलेबस ओडिशा's natural resource water forests and minerals physiography and riverine system rivers of Odisha already you have got questions on it in the prelims okay तापर salient features of Indian society सेटा ओडिया सोसाइटी को भी होबो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड ओडिशा ता ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपण जेनेरिक क्वेश्चंस एथर को एक्सपेक्ट कर पारे सब जिंस खाली ओडिशा वर्ड ता लगै दैछंती बट देन आपण को केतु सेटा पूरा अलगा ताको पढिया पे करे ओके सो रोल ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट तो हमर बहुत ही पुश करछ मिशन शक्ति को ओके तो तारो डिटेल्स करिका तारो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सिगला सब रहे effects of globalization on Indian society as a whole and Odisha. So, effect of globalization on the society of Odisha. Okay. Then tribal population problems in Odisha, state government cons of the steps mentioned. Okay, so today current affairs will also be included. Like urbanization, growth of urban population and urban centers in Odisha. Okay, urban population or urban centers. Tara, laptop खेती, okay. सब जिनसोडा देखियार अछि तापर पेपर 2 आसिला पॉलिटी हमर सेम कॉन्स्टिट्यूशन तेनो पॉलिटी रे बेसिक जेंति नै कि हमर कॉन्स्टिट्यूशनल जिनसोडा किछ अलगा थिबो ओके एथरे केतेटा पर्टिकुलर जिनस देखियार अछि कोन ओडिशा राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट
Odisha Lok Ayukt Act. Okay, representation of People's Act सेटा Odisha specific नो generally एटा सेटा अपना mains नो जो मैम नो जो अपना क्लास से तरह अपन देखने से okay तो এই পার্টটা রহিলা আপনাদের ওড়িশা রাইট টু পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট ঠিক আছে বট গোটে গোটে পার্টিকুলার পাবলিক সার্ভিস ଅଛି সেটা কেতে দিন ভিতরে আপনাকে দবার ଅଛି যদি ন দউଛନ୍ତି তাহলে যে রেসপন্সিবল অফিসর তাଙ୍କୁ কেতে ফাইন হবো ওকে এটা সব ডিফাইন্ড আছে সপোজ ইউ অ্যাপ্লাই ফর আ পাট্টা with all the proper documents তাহলে কেতে টাইম আপনাকে লাগবে ওকে ইট ইজ ফিক্সড অ্যাকর্ডিং টু দিস অ্যাক্ট ওকে तो से हिसाब रे आपन को यू हैव टू नो दिस थिंग्स ओडिशा लोक आयुक्त एक्ट ओके एबे कोन मैं एक्ट रो सेक्शंस कोने रखि कि ना तार इंपोर्टेंट सेक्शंस कोन अछि कोठी सेटा हमें देखिबा बट ओवरऑल कोन तार व्यवस्था कोन कराई छि प्रोविजंस कोन अछि आ एक्चुअली केमति चल ओके एबे रिसेंटली आई थिंक गोटे मास आगु ओडिशा पोस्ट रे बढ़िया क्रिटिक गोटे बाहर थिला ए ओडिशा राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट ओके कि ए जो लीगल हायर सर्टिफिकेट हैला कि आपनकर अलगा जो सर्टिफिकेट्स हैला गवर्नमेंट प्रोसेस टा स्ट्रीमलाइन कर देछि किंतु डिस्क्रिप्शन बहुत जगह दे कि तेनु ऑल्दो ठीक सर्टिफिकेट्स दिया हिथिबो से माने ताको ब्लॉक करके पके दोचंती ऑफिशियल्स माने कहउचंती कि से अम्बो से नाही जोटा कि एक्चुअली रिक्वायर्ड नो ओके तो ता भीतर से गोटे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रो केसेस उडा नहीं थिले कि ए पर्टिकुलर जिल्ला रे एमती केतेटा केसेस आसिला जोठी कि से रिक्वेस्ट करथिला सिटीजन बट तांको सर्विस टा मिलिलानी आ तांको भितरु केते जणा आगु गले मींस से माने प्रोटेस्ट कले कि सेने अपील कले नेक्स्ट लेवल पे ओके तो सेटा जणा पड़ला कि इट वाज लेस देन 7-8% ओके त माने कोन जदि सेटा मिलुनी सर्विस टा सिटीजन ताले तार अलगा व्यवस्था कर कुछ गले तो से दोस थिंग्स आल्सो वी हैव टू सी आ एगुडा ऑब्वियसली आपन को टाइम्स ऑफ इंडिया की हिंदू रे मिलिबनी এটা ওড়িশা স্পেসিফিক নিউজ এই টাইপ অফ গভর্নেন্স র নিউজ গুলা হলা ওকে ইউ ক্যান গেট ফ্রম এ ডেডিকেটেড ইংলিশ নিউজ পেপার ওড়িশা ରୁ ওড়িশা পোস্ট বহুত ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଅଲଗା পেপারস ର ওড়িশା ର পেজেস ବି আছে ওকে তারপরে আসিলা রোল অফ সেন্ট্রাল এন্ড স্টেট সিভিল সার্ভিসেস ইন এ ডেমোক্রেসি তো আমরা স্টেট সিভিল সার্ভিসেস টা দেখিবা PRIs in Odisha panchayati raj institutions and other such type of grassroots level institutions जेमति कि हमरो पानी पंचायत करिकला से पूरा सब हम देखिया रहछ एंड ओडिशा एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस ओके ऑन इश्यूज अछि हिस्टोरिकली ऑन रिलेशन हमरो से पर्टिकुलर स्टेट संगे ओके तांको संगे रे हमरो अलगा संपर्क केमति अछि बिजनेस ट्रेड कॉमर्स जोडा केमति ओके तापर आसला सोशल जस्टिस एथरे भी एवरीवेयर दे जस्ट इंक्लूडेड द वर्ड ओडिशा तो कोन होछि ना 60% 70% of the posts ओडिशा रहउछ इट इज अ वेरी गुड थिंग ठीक अछि जो माने मेंस में पढ़छ जेतु एटा ओडिशा मॉडल तो मु तो ओडिशा ऊपर ही कंसंट्रेट करबी जो माने लॉन्ग टर्म पढुछथि नेक्स्ट ईयर एग्जाम देबे कि ता नेक्स्ट ईयर एग्जाम देबे आपण माने गोटे टाइम से मन रखंतु जेतेबेले आपण जहा भी पढुछथि एबे तार ओडिशा इक्विवेलेंट ता भी आपण को माइंडेड रखि पढिबार अछि ओके तो इटी ये सबु जक we will be covering Odisha part jaja science and tech re bhi se economic development re bhi se okay so those issues we will study all these summer disaster management cyber security money laundering ये सब कुछ Odisha aspect ta even GS paper for ethics of integrity re examples and certain case studies gote case study mate laguchi asi pare related to any kind of conflict okay or any kind of issue with tribal if the amount of tribal population I must state okay substantial tribal population achi the case studies on the above issues they say Odisha related भी किछटा अपन expect करि पारि तो एथरे भी जा Odisha related किटा अछि सेटा में देखियो okay कुछ बात so let us start with the first part syllabus of first part में अपन को रहला salient aspects of art forms literature architecture from modern ancient to modern time तो आज हम देखिबा
ओके जेटा ओडिसा रो रॉक आर्ट तरीका sculpture okay those parts we will see so please be prepared to write mu bujhe bhi tike जोटा important keywords अछि कहिबी ताको अंडरलाइन कर दो पे तमने जेतोले आपण एग्जाम रे आंसर लिखिबे से कीवर्ड्स उडा आपण को अंडरलाइन हेतिबा दरकार ठीक अछि so that is important that you have to keep in mind आउ ता जो चाचा important आंसर होछि मु एठी लिखिबी in case you are unable to write it you have to देखि भी लिख पारबे okay पूरा सेंटेंस तो लिखि देनी बट तारा कीवर्ड्स उडा लिखि देबी व्हाइट बोर्ड okay so you can follow that okay now a doubt jodi kar achi you can ask me okay just so first question take down question number 1 so eta question answer form re rahibo before that let me tell you ki apanଙ୍କର जहाँ जहाँ मैं आंसर डाकुची एवढा 15 मार्क क्वेश्चन पे आंसर डाकुची त माने these are all 15 मार्क क्वेश्चंस 10 मिनिट जोटा आपण लिखिया कथा जदि सेही क्वेश्चन ता मते 10 मार्क रो पडुची जोटा 7 मिनिट लिखिया रहची आपण देखि ता भितर कोन काटिबार अछि दैट यू कैन डिसाइड ओके ऑलवेज रिमेंबर आपण यदि 5 6 टा पॉइंट पढि कि जाउछन्ती सेटा से एग्जाम हॉल रे आपण को 5 6 टा क्वेश्चन मने पडियो किछ माने नै 5 6 टा पॉइंट ओके तेणु आपण को परियार अछि ना आपण एटलीस्ट 10 टा कि 12 टा देखि जानतो तो सेठी आपण को एटलीस्ट तो 8 टा तो मने पडि दियो ओके तो टिके एक्सप्लेनेशन देखि ठीक अछि 15 मार्क में भी मु कवर अप कर पारे ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन टेक डाउन ए जो क्वेश्चन ना दोची आर डिफरेंट styles or different variations possible of जेमति कि मु एबे अपन लेट्स से प्लीज टेक डाउन द क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रॉक आर्ट इन ओडिशा ओके राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रॉक आर्ट इन ओडिशा मु सबुडा एंती शॉर्ट नोट हिसाब रे देबी सिंपल वे रे सो दैट अपन को रॉक आर्ट इन ओडिशा पर जो भी क्वेश्चन पड़ला अपन को ए आंसर लिखियार अछि ओके राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रॉक आर्ट इन ओडिशा write a short note on rock art in Odisha. Now let us discuss the answer. Okay, points कौन आथरे लिखिबार अछि मैं आंसर टा डाकुची अपन ताको लिखंतु ओके एग्जैक्ट आंसर टा तो फर्स्ट कम टू हेडिंग देबे ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ओके ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ता अंडर कौन लिखिबे ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है जस्ट टेक डाउन Odisha is recognized for its significant contributions. Odisha is recognized for its significant contributions to Indian art, particularly
through its monumental structures and sculptures, particularly through its monumental sculptures and structures. What question मिलला तो मैं first underline कर देली rock art. Okay, तो rock art ऊपर ही मैं focus करके लिखी. Okay, अच्छा जो rock art ओडिशा रे मिली ची ना केबे टू केबे पर्यंत हमको मिली ची. Okay, ता ऊपर गोटे लाइन में लिख पारे गोटे पॉइंट लिख पारे. So next point take down historical range. Historical range. Historical range. Okay. The heritage of rock art in Odisha. The heritage of rock art in Odisha spans from prehistoric period spans from prehistoric period to early Iron Age. So it underline करंतु prehistoric period to early Iron Age. Underline that phrase. Prehistoric period to early Iron Age. केबे केबे कौन होबो ना हमको सब हेडिंग लिखिबार टाइम नथि. ओके ए जो आपण लेखुछथि हिस्टोरिकल रेंज ओके जियोग्राफिकल एकुडा लिखिया पे एक्चुअली टाइम नथि. तो मु सीधा पॉइंट रे लिखिबी आ पॉइंट रो जो पार्ट ताको इंडिकेट करूची मोर ओके सब हेडिंग की ताको अंडरलाइन करते. ठीक अछि. सो फ्रॉम प्रीहिस्टोरिक पीरियड टू अर्ली आयरन एज. बोला नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु आर्किटेक्चरल डिस्कवरीज और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज. पॉइंट 3 आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज. Archaeological discoveries. Archaeological discoveries. Initial evidence of rock art. Initial evidence of rock art. Initial evidence of rock art was found in rock engravings. Initial evidence of rock art was found in rock engravings at Vikramford. At Vikramford in the Jharsuguda district. Initial evidence of rock art was found in rock engravings at Vikramford in the Jharsuguda district. Okay, that initially 80 feet. Mainly our rock art rock sites to the mainly western part of Odisha. Okay, so next heading subheading distribution of sites. Distribution of sites. Distribution of sites. Okay. So Odisha has 28 known rock art sites. Odisha has 28 known rock art sites. 28 known rock art sites को underline करो. 28 known rock art sites. Primarily located in the western districts of primarily located in the western districts of Sundargarh, Jharsuguda, Sambalpur, and Kalahandi. Primarily located in the western districts of Sundargarh, Jharsuguda, Sambalpur, and Kalahandi.
around 75%, around 75% of these sites, around 75% of these sites are located in Sundargarh district. Around 75% of these sites are located in Sundargarh district. Okay. So it is spread, okay, distribution set up on the kid. It actually hates on. You have studied about Bhimbetka and all, okay, Madhya Pradesh, UNESCO World Heritage Site setup. So, say type it actually Odisha re jo amara rock art achi. Okay, sitra actually hates on. So, next heading the on natural shelters and human occupation. Natural shelters and human occupation. Natural shelters and human occupation. हाँ जो मैंने गूगल मीट रे अछंती आपण अनम्यूट करंतु एंड आस्क योर क्वेश्चन ठीक है because it will be very difficult for me to go and read the messages ठीक है unmute yourself and ask your question. Natural shelters and human occupation. First point देखंतु तो एठी एक्चुअली माने ओ फॉर्म रे कोनटा अछि हमरो ओडिसा रो रॉक आर्ट गुडा. So first point under that the fringes and cliffs of hills, the fringes and cliffs of hills, the fringes and cliffs of hills in these areas the fringes and cliffs of hills in these areas provided natural rock cavities. Okay, to holes गुडा okay किंबा जो जगह रे रही परिबे लोक caves करिका provided natural rock cavities that served as shelters for prehistoric humans that serve as shelter for prehistoric humans. That is the first point. Natural shelters and human occupation. Okay. कौन अच्छे actually caves रे human माने कौन बनिचंदी prehistoric human माने. Next point. These rock shelters feature ancient paintings and engravings. These rock shelters feature ancient paintings and engravings offering insight into early human life and art. Offering insight into early human life and art. Third point. So actually ये जो art forms और art sheet, okay, तो इतने कौन को patterns of each. So third point, continue. The art includes engravings and paintings of geometric shapes. The art includes engravings and paintings of geometric shapes. Geometric shapes. Like circles, squares, rectangles. Like circles, squares, rectangles.
and animal figures and animal figures such as humped bulls and deer, such as humped bull and deer. Example. ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ example. କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏଗୁଡ଼ା, right? Rock art sites, right? ତ just ଖାଲି ତା ନାଁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, okay? ଆଉ ତାର ସ୍ପେଶାଲିଟି କଣ ଅଛି just ଗୋଟେ ଦି ଲାଇନ ରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସେଇ geometric patterns, animals, okay? First तो already हमने mention कर दी, just take down. Number 1, Vikram Fort, Jharsuguda district. Okay, it is the best known kind of both bada and well preserved. Okay, the side रे खाली लिख दियो तो more than 100 paintings. Okay, जहाँ में कोई लो geometric patterns, animals. Okay, ये motifs थोड़ा सा. So Vikram Fort, number 1, Jharsuguda district, more than 100 paintings. Well preserved. Only keywords like one. Well preserved. More than 100 paintings. Okay. Then point of second example. Ulafgarh. That is also Jharsuguda. Okay. Third, Yogi Math. This is also very famous. Yogi Math. Yogi Math. Kalahandi district. Okay, Kalahandi district. Neolithic cave paintings, underline. Neolithic cave paintings. Right? Done in red color. Okay, Yogi Math se jo paintings toda achi. Done in red color. Same animals, geometric patterns, humans, same. Okay. Next, some other examples. Sita Binji, that is in Keonjhar. Sita Binji in Keonjhar. Okay. आरो स्पेशलिटी कौन बहुत गुटे कलर्स यूज होइछि जेति कि हमें देखिनु कि प्राइमरीली रेड यूज हेतिला एठी किंतु जस्ट टेक डाउन many colors, okay, use of many colors like red, white and yellow. Okay, like red, white and yellow. एमती आउरी भी बहुत गुटे साइट्स अछि. Okay, एठी कोन ना हमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस करू. झारसुगुड़ा रो दीटा गला, कलाहांडी रो योगी मठ रहला. Okay, এটা কেউঞ্ঝর তারপরে লাস্টটা লিখন্তু বাট देयर आर लॉट मेनी बट কথাটা হলা যেতিকি মু ডাকিলিনি এটা 15 মাস পাই भी লিখি হবনি কথাটা হলো মু পাঁচটা জানলে তাই তুমি গোটে কি দুইটা লিখি ওকে সো এক্স্যাক্টলি 150 কি 250 ওয়ার্ডস আপন পড়ନ୍ତି তাতে টিকে ଅଧିକା পড়ନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେଠି 100% ରିକଲ୍ କେବେ ବି ହବନି ଏକ୍ସାମ ହଲ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଓକେ ସो टिके ଅଧିକା ପড়ଥିଲେ ହଁ ଦୁଇଟା पॉइंट बाहरी गले भी जेतिकी मोर मन रहिथिबो जेतिकी मु बुझिथिबि सेटा मु आराम रे 250 वर्ड्स पे लिखि देबि और जदि 150 वर्ड्स पढ़ले त ताठू आउरी टुटा बेसी इंपोर्टेंट सेटा मु लिखि लास्ट लिखंतु भीममंडली ओके संबलपुर डिस्ट्रिक्ट so as the name suggests it's a mandali means it's a group of rock painting okay rock shelters and engravings right
it be primarily red color ta usage. Okay, color has been used, that is red. Okay, देखिले ना. So this is basically a proper rock art in Odisha. ठीक है sir? इटा हला यदि rock art ऊपर पड़ला, this much you have to write. यदि किसी generic points काढ़ी देले चली जिवो, but जो last रे हमें तरह examples देलु, okay, सेटा at least दी तीनटा आपण देबे. आउ चेष्टा करिवे different districts दबा. Got it? अच्छा, आपको केमिति आपण better exam orientation रे पढ़िबे, तो क्लास सरला परे आपण को रनिंग नोट्स बने देछथि. सी मु पीडीएफ सीधा गोटे माने बनै कि सेटा ये करिबी, ताहले जल्दी कि थ्योरी क्लास रे करू, राइट. तापर आपन को दे देबी, बट सेतरे राइटिंग प्रैक्टिस हो. सेटा इंटीग्रेटेड बैच में सेटा करा. बट दिस बैच इज स्पेसिफिकली फॉर मेंस, जो माने मार्च रे मेंस लिखि. ठीक अछि. तेनु आपण माने को राइटिंग प्रैक्टिस ता भी दरकार. दैट इज व्हाई आई एम डिक्टेटिंग एंड यू हैव टू राइट. ठीक अछि. अब ये यू नो इट्स बेटर अपन जब नेक्स्ट ईयर भी दोचंती ता नेक्स्ट ईयर भी दोचंती लेखन मो सांगे रे लेखन, so that your ready notes is done by the time we finish this module. Okay, आउ सेटा को फर्स्ट रे कहितले आउ रिपीट करछि, जो क्लास नोट दोछि आउ जो प्रिंटेड नोट अपन को मिलिबो से टोटली अलगा थिबे. बेसी अपडेटेड और बेसिक पॉइंट्स अपन को क्लास नोट पे ही अपन को. ठीक अछि. ओके, आउ जे तो टाइम शॉर्ट अछि, we just have to okay jump from question to question. एबे एई क्वेश्चन टा पढो तो आई विल गिव यू 1 मिनट, यू रीड दिस. ओके, इतरे डाउट रहिबार बेसी किछि नाही, बट स्टिल देन जदि को पचरेल अछि, अनम्यूट एंड आस्क. ऐप रे जो माने अछंती, यू कैन आस्क इन योर यू नो अपना तको ये रे पचर करी. Sir, when we get this question in the introduction and conclusion, how should we start it? Because this is the body basically. So introduction and conclusion, how can we start? Introduction और conclusion देखो तो सी सब एटी क्वेश्चन टा एक्चुअली से कौन देला, राइट ए शॉर्ट नोट. ठीक है तो शॉर्ट नोट ही अपन को पचाची गोटे किंबा जदी अलगा किछि से पचार. ओके, ओडिशा इज फेमस फॉर रॉक आर्ट, और द रॉक आर्ट इन ओडिशा जति यूपीएससी रे गोटे फर्स्ट स्टेटमेंट दबो, से क्वेश्चन रो डिमांड ता ही एति कि आपण रॉक आर्ट इन ओडिशा ऊपर शॉर्ट नोट लेखन. बट से प्रथमे गोटे किछि गोटे से रॉक आर्ट इन ओडिशा ब्ला 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 से जहारी गोटे देला गोटे स्टेटमेंट. ओके, जस्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द मेन सब्जेक्ट व्हिच इज रॉक आर्ट इन ओडिशा. ता परे क्वेश्चन ता दो. ओके, विथ रेफरेंस टू द above statement आपण एआई लेखन. ठीक अछि. सो से हिसाब रे एठी हमें आपण देख परिबे फर्स्ट जोटा आपण को रहला, Odisha is recognized for its significant contribution to Indian art, particularly through its monumental structures and sculptures. से थ्रू हमें स्टार्ट करि परिबो. ओके, वन लाइन रो कि मैक्सिमम जदी आपण पाके बहुत समय अछि, दी लाइन रो इंट्रोडक्शन देबे. Okay, we will see. गोटे गोटे ये रे one line is proper, और two lines से अपन दबे जाउं जदी if you write very fast ताले ठीक अछि. ओके, आउ क्लास परे एग्जैक्टली सेम आंसर टा लेखंतु केते समय रे सारी पाउछु. ओके, 15 मार्क पई 10 मिनिट रे सोचि कि नहीं, आउ 10 मार्क पई 7 मिनिट रे सोचि कि नहीं. ताले मो हाथ रे 10 मिनिट बळिला टू थिंक, टू यू नो रिवाइज, टू मेक ए डायग्राम व्हाटएवर. पूरा 180 मिनिट्स को डिवाइड कर देबे. ओके, 10टा क्वेश्चन 7 मिनिट्स रो 10 मार्क किया 70 मिनिट गला 10टा क्वेश्चन. ओके, 10 मिनिट्स पई 15 मार्क रो 100 मिनिट गला 70 प्लस 100 170 minutes out of 180 minutes. I have 10 minutes with me because I can't think like a robot. Constantly bhabiya padibo. Maybe I need to scribble something. Okay, kete jagah रे break maybe. ठीक है, break माने 30 seconds 5-10 seconds. किछि भाबी भी किछि. ओके, तो पूरा 180 मिनट्स को डिवाइड कर देले एक्चुअली एग्जाम हॉल रे सेटा डिफिकल्ट. क्वेश्चन नंबर 2 को नियंतो. एठी हमें देखिबा केमती हमें स्टार्ट करिबा और एंड करिबा गोटे गोटे. ओके, question 2, take down, write a short note on Jain architecture in Odisha. Very important. Buddhist architecture, Jain architecture in Odisha, both are very, very important questions. Temple architecture तो obviously important. Temple architecture तो अलग segment अच्छी next segment.
तो मु आउ टेम्पल आर्किटेक्चर एटी डिस्कस करिबिनी एटा मु हमर डांस डांस हमर कल्चर और हेरिटेज जोटा से फाइन आर्ट एगुडा सब सरला परे सेकंड पार्ट मु सिलेबस वाइज जिबे सेकंड पार्ट रे जो अछि सिलेबस रो ओके टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा ता परे मु सेटिके जिबी ओके सेटा मु ओपनली भी यूट्यूब पे बहुत बे वीडियोस दिया आइछि सेटा कंप्लीट कराइछि राइट सो टेक डाउन क्वेश्चन नंबर 2 जैन आर्किटेक्चर इन ओडिशा जेमिति भी अपना क्वेश्चन टा कॉन्स्टिट्यूट कर परिबे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जैन आर्किटेक्चर इन ओडिशा ओके जैन आर्किटेक्चर इन ओडिशा वन लाइन इंट्रोडक्शन जदि हमें ओटे दबा देखो इंट्रोडक्शन टा सिंपल हेतिबा दरकार आउ मु आगु कोन लिखिबी से किछ गोटे कन्वे करिया दरकार ठीक अछि हमें ग्रेजुएशन रे जदि देखु से टाइप न लिखि जदि किछ कंटेंट थिबो ओके so take down eta introduction okay and introduction try to limit it to one line okay बहुत जदि टाइम अधिक अछि कि आपण पॉइंट्स कम लिखिबे ताले दी लाइन की जाय परिबे आउ ए सब क्वेश्चन रे द मिक्स ऑफ डेटा इट इज ए जैन आर्किटेक्चर पचारले माने मु लिखिबी कोठी कोन अछि आउ सेठी फीचर्स कोन था तार इंपोर्टेंस ता कोन ठीक है तो बहुत जेनेरिकली हाँ से बहुत भला आर्किटेक्चर और ये सेगुड़ा लिखिबार नै पर्टिकुलर जिंस लिखिबार अछि टेक डाउन इंट्रोडक्शन पार्ट आ गोटे कथा जो माने करूचंती आंसर राइटिंग क्लास राति रे महापात्र संगर सर फर्स्ट क्लास रे दीटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस कहथिले मु आउट रिपीट करछि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपण को बुझिया पई परीक्षा खाते रे लिखि देबेनी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ओके जो भी आपनकर मटेरियल रे सेंति लेखा होची सेटा आपण को बुझिया पे लेखा होची परीक्षा रे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हेडिंग्स दिया हबो नाही ओके तो बहुत ही गोटे माने फुलिश टाइप रो देखा जाय राइट so सेटा देबेनी so take down एटा हला इंट्रोडक्शन but you don't write introduction Jain architecture and shrines in Odisha Jain architecture and shrines मंदिर जो जैन मंदिर Jain architecture and shrines in Odisha represent a significant chapter in the state's ancient history अपन एटा अपन को रनिंग नोट्स राइट तो मु जेमति डाकु छी अपन को गोल गोल अक्षर रे ताकू पूरा फुल सेंटेंस लिखिया दरकार नै if you are adapted to using mnemonics माने शॉर्ट फॉर्म अपन लेखन सेटा कना सेटा अपन को नोट अपन ही पढिबे सेटा ठीक अछि अपन को दबार नै कि अपन ताकू it's not like you are making a note to be photocopied or something right so जल्दी लिखिया भाई you can use mnemonics short form in the state okay significant chapter in the state's ancient history showcasing intricate artistry and religious importance eti intricate artistry or religious importance को underline करो okay state's ancient history showcasing intricate artistry INTRICAT intricate artistry underline above and religious importance underline now religious importance okay ta mane kono dharma okay say time kalinga jinno eguda सब रहला and artistry okay the Khandagiri Udayagiri cave sorry seguda okay तो एबे तार points रा introduction आसीला now come to the points see points I am dictating more than required because ता भितर you weed out जोटा कि आपण लागु कि बहुत जेनेरिक हे गला किंबा आपण पढिबे सब सेठी जा टाइम मेंटा लिखि पॉइंट 1 लिखंतो Jainism in Odisha flourished especially during the reign of Emperor Kharavela in 1st century BC okay then point 2 the most prominent examples of Jain heritage
are found in the caves of the Twin Hills, are found in the caves of the Twin Hills of Khandagiri and Udaygiri. Twin Hills of Khandagiri and Udaygiri near Bhubaneswar. Near Bhubaneswar. Third point, these caves were carved out of solid rocks तो मोबाइल टाइम नहीं एग्जाम रे भी ताले कौन ना मु पूरा सेंटेंस न लिखी एक्चुअली पूरा सेंटेंस लिखिबाटा एडवाइजेबल तो टाइम ही नहीं है ठीक रे टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर पारे नहीं एबे ए क्वेश्चन टा अछि 15 मार्क रो मु पाके 7-8 मिनिट अछि ताले these caves were carved out these caves are the carved out of solid rocks okay so but आपण एबे सिंपली लिखंतु these caves were carved out of solid rocks at the behest of Emperor Kharavela, at the behest of Emperor Kharavela, for the ascetic practices of Jaina monks. For the ascetic, ASCETIC, ascetic practices of Jaina monks. Okay, ascetic practices of Jaina monks. तापरे आरो टिके स्ट्रक्चरल डिटेल्स देबे नेक्स्ट पॉइंट तो सब हेडिंग का पे मोर टाइम नहीं तो मो जेतोले लिखिबी पॉइंटटा सेथरे जो सब हेडिंग रो कंपोनेंटटा अछि ताको अंडरलाइन कर सो टेक डाउन द पॉइंट द आर्किटेक्चरल फीचर्स अंडरलाइन आर्किटेक्चरल फीचर्स द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द केव्स इंक्लूड द आर्किटेक्चरल फीचर्स of the caves include eta gote inso मन रखबे जनरल कथा सब पेपर नै लागू एटा जते बले म गोटे पॉइंट दउची एथरे दीटा जिंस रहला कोन फॉर एग्जांपल लिखि दियंतु पॉइंट तापर म पॉइंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द केव्स इंक्लूड detailed facades FACADES comma pillared verandas VERANDAS pillared verandas and inner cells so we know the 10% underline pura sentence to underline karibi adare underline karibi kon detailed facade pillared veranda inner cell na architectural feature always remember the architectural feature okay why this point is important what this point explains seita underline ओके जितोले हमें पॉइंट वाइज लिखुछु जोटी के समय नहीं हमको गोटे सब हेडिंग दबार ताले सब हेडिंग रे जो पार्टटा जो कीवर्ड टा लिखा है सेटा अंडरलाइनिंग हबो सो एई पॉइंट रे आर्किटेक्चरल फीचर टा अंडरलाइन करो नेक्स्ट पॉइंट द हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन नियर भुवनेश्वर द हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शंस नियर भुवनेश्वर प्रोवाइड a rich historical record of Kharavela's reign REIGL of Kharavela's reign and the prominence of Jainism कहने ताको डायनेस्टी परे छेदी डायनेस्टी को जेतोले से माने रहिलेनी जैनिज्म रो भी डिक्लाइन होला बुद्धिज्म इमर्ज कला ओके तापरे जोटा कि आपण कहि परिबे वैष्णविज्म इशिटिज्म ओके से गुडा इमर्ज कला जोटा कि हमें एबे हिंदुइज्म कहू नेक्स्ट पॉइंट आर्टिस्टिक स्कल्पचर तो एई जो पर्टिकुलर खंडगिरी उदयगिरी रे आउ टिके डिटेल्स देबे कोन अछि artistic sculptures in the caves portray a variety of animals and birds including symbols associated with Jain Tirthankaras
associated with giant tirthankaras like lions, peacocks, etc. Like lions, peacocks, even snakes, etc. Okay. Next point. Advanced craftsmanship. Advanced craftsmanship and excellent understanding of advanced craftsmanship and excellent understanding of spatial design. अल्प स्पेस रे मैक्सिमाइज केमती करा हबो स्पेस टा स्पेटियल डिजाइन SPATIAL. ओके तापरे reign of Charavela is referred to as golden age of Jainism in Kalinga. Reign of Charavela referred to as, okay, or is referred to as golden age of Jainism in Kalinga due to extensive religious and cultural activities. Due to extensive religious and cultural activities. So say extensive religious and cultural activities का underline करो. Okay, next point. The caves, माने जो खंडगिरी उदयगिरी कथा में कहूँ. The caves reflect a unique blend of artistry and practicality. So it underline करिवे artistry और practicality. What are the features? The caves reflect a unique blend of artistry and practicality. Okay. The fall of, next last point, the fall of Chedi dynasty, the fall of Chedi dynasty marked the beginning of decline of Jainism in the region. The fall of Chedi dynasty marked the beginning of decline of Jainism in the region. Okay. Tapare, one line conclusion. The Jain architecture and shrines of Odisha, the Jain architecture and shrines of Odisha stand as a testament to a bygone era, stand as a testament to a bygone era, offering insight into religious life and artistic achievements, of its ancient inhabitants. One line conclusion. A conclusion is that around 70 questions total. Okay, paper 1 history, culture, heritage, okay, around 70 questions Odisha related. अपन देखिए जदि अपन टेम्पलेट हिसाब रे तार कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को रखिबे ताले 4-5 टाइप रो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बाहरिबे जोटा कि सब पय हमें यूज करबे सेटा अपन 15-20 टा क्वेश्चन देखि सरला पर से जान. ओके, सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन अपन कर एबे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अबाउट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर.
Okay, এটা Jaina architecture gala. Now come to Buddhist architecture. Write a short note on Buddhist architecture in Odisha or any variant of this question. UPSC में भी एमती पढ़ुची. Okay, Buddhist architecture in Odisha during the later Moiran period, okay, is an example of elegance along with religiosity. ठीक है, discuss. Answer same. से जहाँ लेखु कथाटा हला से कहूची कि बुद्धिस्ट ओके आर्किटेक्चर ओडिसा रे कोन ता ऊपर लेखन से ता आगे रे जहाँ सेंटेंस लगे तो हमर कुछ करे ठीक है सो मु आपन को डायरेक्टली जोटा कि सिंपलेस्ट क्वेश्चन सेटा दउची से क्वेश्चन रो जो भी मैनिफेस्टेशन रहइबो आंसर आपन मोर और लेस सेम रहइबो क्रक्स ऑफ द आंसर विल बी सेम ओके सो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बुद्धिस्ट architecture in Odisha. Okay, Buddhist architecture in Odisha. So take down introduction. Okay, introduction. Just you know that it's introduction. The Buddhist architecture and shrines of Odisha. The Buddhist architecture and shrines of Odisha reflect a confluence of mix of okay spirituality, artistry and history. Underline spirituality, artistry and history. It in underline spirituality, artistry and history, marking the state as an important center for Buddhism in ancient times. Marking the state as an important center for Buddhism in ancient times. In ancient times. Okay, first point. Buddhism found an early footing in Odisha. Buddhism found an early footing in Odisha even before Emperor Ashoka's campaign in Kalinga. Even before Emperor Ashoka's campaign in Kalinga in 261 BCE. So Ashoka did not bring Buddhism to Odisha. Okay, even before Emperor Ashoka's campaign in Kalinga in 261 BCE. Okay. Then Ashoka's remorse after Kalinga War led to his conversion from Chandashoka to Dharmashoka. ये जो local words करिका से पूरा हमको निहाती यूज करिवार अछि तो सेटा अंडरलाइन कर दे सेटा conversion from Chandashoka, okay, Chandashoka to Dharmashoka. Although modern historians mane jete achani post independent historians बहुत ज्यादा, not the leftist ones like Romila Thapar and Arish Sharma semanan kata boni ebe jo modern historians achandi okay semananko kaya kata with evidence that this is wrong tara bahut aguru se Buddhist research thile even during the time he was conquering he was a Buddhist but anyway the exam re ame jaha lekhuchu 90% theoretical माने जोटा कि हबा कथा एक्चुअली कोन होची सेटा तो हमें देखु राइट लिखिया कथा भी नो so anyway if you are interested in the changes in history in the sense that historical evidence सहित okay so बहुत बड़ा historical evidence में आसलानी जो तरह की किंबा interpretation okay जो टाइम रे जते बोले से नेहरूवियन पोर्टरी रे जते सब थिले historians से माने हम हिस्ट्री जते लिखिले से जानि सुनि कि बहुत जिंस ट्रांसलेशन रो ये रे से ताको जहा मे बी ऑर्डर करा था कि जहा से माने से हिसाब रे तक लिख एबे जते बोले मॉडर्न हिस्ट्री हमें साइंटिफिक एनालिसिस जते जहा बाहर होती बहुत जिंस हमके बाहर लानी जोटा कि okay which has led to breakdown of the very foundations on which
this leftist history stood. ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାର example ହେଲା complete debunking of the Aryan invasion theory. ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା Indians ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା neutral countries of किंवा Europeans ମାନେ କରୁଛନ୍ତି through DNA sequencing and all. Okay, but anyway, ତା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ. If you are interested in history, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ websites ଅଛି, research oriented websites ଅଛି, not like fake news and all. ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପୁରା with details ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ if you are interested. Okay. ଆଉ second ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ଯୋଉ local words ଗୁଡ଼ା ଅଛି, okay, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆମେ underline କରିବା. ତ ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ conversion ଟା ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି general English ରେ ବି ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯାହା ବି ମତେ ମାର୍କ ମିଳିଥାନ୍ତା, from ଚଣ୍ଡାଶୋକ to ଧର୍ମାଶୋକ ଟା ଲେଖିବାଟା better. Okay, conversion from Chandashoka to Dharmashoka and led to commissioning of significant edicts. Okay, major rock edicts amar achi Dhaulire au Jaugadare, and led to commissioning of significant rock edicts at Dhauli and Jaugada. Significant rock edicts at Dhauli and Jaugada. Dhauli au Jaugadare actually कौन? Next point. The Dhauli site is notable for its elephant sculpture. It's a very important point. Dhauli site is Jadi Buddhist architecture. The Dhauli site is notable for its elephant sculpture, considered the earliest Buddhist sculpture in Odisha. Considered the earliest Buddhist sculpture in Odisha, symbolizing Buddha's birth. Symbolizing Buddha's birth. Okay, symbolizing Buddha's birth. Okay, next point. Wingsang's travels in 638 CE. Wingsang's travels in Wingsang's travels in 638 CE paints a rosy picture of Buddhist heritage in Odisha. Buddhist heritage in Odisha with numerous monasteries and monks. Okay. Next point. Diamond triangle, right? The archaeological triangle of Lalitgiri, Udaygiri, and Ratnagiri. The archaeological triangle of Lalitgiri, Udaygiri, and Ratnagiri holds the remnants of a flourishing Buddhist culture. Holds the remnants of a flourishing Buddhist culture with monasteries, stupas, and sculptures. Holds the remnants of a flourishing Buddhist culture with monasteries, stupas, and sculptures. Okay. Next point. These sites house intricate sculptures of Buddha and Bodhisattvas. Underline Buddhas and Bodhisattvas. These sites house intricate sculptures of Buddhas and Bodhisattvas
showcasing the artistry, of that period. Okay, सेटा रहला तापरे जो लोकल डायनेस्टीज तांको भितर सबटु प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट डायनेस्टी थिला होमकरस. ओके, होमकरस हिस्ट्री रे हमें पढिबा. होमकर माने जतले आसिले एठी तो तांको आगुरु यू नो प्रॉपर सोशल ऑर्डर ता जोटा आगुरु थिला गोटे कास्ट बेस्ड सोशल ऑर्डर जोटा हमें वैदिक पीरियड रु पाइथिलु सेटा ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जायतिला ओडिसा. ऑल्दो दे वर बुद्धिस्ट से माने सेही ऑर्डर ता को पुनी वापस आनले आस्ते आस्ते और तांको परे अदर जो माने सब आसिले से माने आउरी स्ट्रॉन्गर कले ड्यूरिंग द गंगा टाइम. गंगास माने बाहरु यू नो कंप्लीट संस्कृताइजेशन ऑफ ओडिसा कल्चर से माने कले. ओके, ब्राह्मण्स मानकु काशी हरिकारु आनी की ओके नॉर्थ इंडिया रु आनी की एटी तक सेटल करे. ठीक अछि. So Bhaumas were basically they were Mahayana Buddhists, most of them, but semane सब religion promote. Okay, in fact they were Mahayana Buddhists, but they promoted and during their period Vajrayana Buddhism started in Odisha, Tantric Buddhism. So Tantra Siddhita एटा Buddhism को भी affect कला, Shivism को भी affect कला. तो Shivites माने एटी थिले सेमानकर भी किछि तांत्रिक रिचुअल्स पसंद. तांकर भी बहुत राजा थिले और रानी माने थिले जो माने शिव भक्त थे. सेटा डायनास्टिक हिस्ट्री में देखि तो भौमकर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो तो द भौमकर किंग्स particularly in 8th century, the Bhaumakara kings particularly in the 8th century actively promoted Buddhism, contributing to proliferation of Buddhist architecture. Many stupas are examples of this. Normally, stupa, most of you would be thinking that is a Buddhist concept. Okay, but that is wrong. It was popularized by the Buddhists, but stupa basically is a Vedic concept. Okay, it's a Vedic concept, but it was popularized, okay, by the Buddhists. Right? Mauryan period re jayega, tapre post Mauryan period re, okay, various dynasties were there, so mane tako popularized kare. Right? But originally a Vedic concept. Okay, stupa. Right? Tapre next point. The remains of stupas, viharas and chaityas. Point to sophisticated architectural style. Okay, but you have to give some detail. And in the generally regular mark as so, kichika detail doba. Next point देखो. Ratnagiri in particular is recognized for having complex monastery plans. Ratnagiri in particular is recognized for having complex monastery plans, including a large number of ancillary stupas, surrounding the main stupa. The main stupa rahila ta side re charipote. Okay, ancillary stupas rahila. Something like ami toda dekhi denu the Panchayatana style. Okay, main central temple rahila, central deity charipote charta out temples. Okay, kuch kar. Just a minute, I'll just take a 2 minutes break.
Okay, let's continue. Ratnagiri in particular is recognized for having complex monastery plans, including large number of ancillary stupas surrounding the main stupa. Eta Ratnagiri pai apna dekhi. Okay, so Ratnagiri re ancillary stupas. Here, our points are there. Next point. How Buddhism influenced Odisha's different styles of architecture. So next point, the influence of Buddhism on regions architecture. The influence of Buddhism on regions architecture extended from early rock-cut caves, to later structural buildings. Significance कौन? ये जो Buddhist architecture था मैं देखी था architecture. Okay. Significance टा कौन? कौन टा से एमती कलिंगन architecture रे कला? Okay. जोड़ा कि ओडिशा रा architectural landscape टा को change कला. तो significance रे हमें वो point लेके करेंगे. So next point, the craftsmanship of the era emphasized the use of locally available materials. So SETA underline to number 1. Okay, locally available materials. The craftsmanship of the era emphasized the use of locally available materials and integrated the region's topography into religious architecture. अर्थ कौन से जो जगह फॉर एग्जांपल आपनकर गोटे सी लेवल ऊपर जगह गोटे अछि ओके रॉकी जगह गोटे अछि तो सेही हिसाब रे नेचुरली ओके जहां आपनकर मिलला सिटी तो सेही हिसाब रे से माने ताको सिटी रॉक कट केव्स बनौथिले ओके सो दे ब्लेंडेड locally available material सेटा यूज ऑफ लोकल अवेलेबल मटेरियल तापरे जो नेचुरल टोपोग्राफी से जगह थिला ताकू यूज करिकी से माने रिलीजियस आर्किटेक्चर बनो ओके सो दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट पॉइंट एंड अगेन तांकर भी आफ्टर 12th century decline start hela so next point the decline of Buddhist architecture started after 12th century. The decline of Buddhist architecture started after 12th century under the Ganga dynasty. Although ancient India, most Odisha at least, all the rulers, ancient Odisha kotha buchi, semane they are quite religiously tolerant to other religions over, but semane patronage particular religion to follow. Okay, Gangas, for example, most Gangas were Vaishnavites. Okay, say and today mein Padiva Bhakti movement and all say guda sabu. Okay, so obviously both later period rahela, but still then they were mainly Vaishnavites. Okay, so mane tar inpore basic focus kar. Okay, so these are the points. Now coming to the conclusion. The Buddhist architectural heritage of Odisha. The Buddhist architectural heritage of Odisha. तो एटिया में किछि स्तूपस विषय रे लिखि परिबा important स्तूपस. Okay, monasteries करिका तो लिखिलो हमें. स्तूपस भी आपण apart from those. Okay, तापरे आपणकर you can name जोटा कि तार traditional names ला यूज कर परिबे. किंतु मैं जोटी खंडगिरी sorry, जो
रत्नगिरी हरिका देखिलु तो सेठी हमर यूनिवर्सिटी भी थिला ठीक अछि द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ता ऊपर भी लिखि पारे बिहार सेठी थिला आउ यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी सेटा भी अपन लिखि पारे the thing is that at the time hobani but you should have an idea of how kon likhi okay so Buddhist architectural heritage of Odisha from stupas to monasteries represents a glorious period that significantly influenced the religious and cultural fabric of the region. That significantly influenced the religious and cultural fabric of the region. Okay, so Buddhist, যদি আপনারা জয়না relics কিংবা জয়না architecture সেইটা compare করিবে Buddhist architecture কো সেটা বেশি important question টা Buddhist architecture. Okay. Now next question. Discuss the evolution of sculptural art in Odisha. Okay. Discuss the evolution of sculptural art in Odisha. Discuss the evolution of sculptural art in Odisha. Okay. So introduction, we start from the sculptural art of Odisha. The sculptural art of Odisha traces back to ancient times. With significant contributions from Buddhist, Jaina and Hindu influences. From Buddhist, Jaina and Hindu influences. Shaping the region's cultural and religious landscape. Shaping the region's cultural and religious landscape. Okay, one line introduction. Now come to the facts. The earliest known Odishan sculpture, just dekhilu Buddhist here. The earliest known Odishan sculpture is the elephant figure at Dhauli. Stemming from Buddhist iconography. Presentation. Iconography icon or a particular subject or image or an icon. Tahara kichi gote boda symbolism thing. Stemming from Buddhist iconography, signifying the inception of sculptural activity in the region. Start here. Buddhist iconography signifying the inception of sculptural activity in the region. Okay, Buddhist. Now let us come kind of introduction. Buddhist school, Jaina school, Hindu school, Samaste contribute to Buddhist school. Jaina school. Next point. The Jaina sculptural art reached its zenith. The Jaina okay, the Jaina sculptural art reached its zenith during the rule of King Aravan. Showcased by Khandagiri and Udaygiri. Showcased by Khandagiri and Udaygiri. Dating to 1st century BC. Dating to 1st century BC.
तो मन रखा बुद्धिज्म धौड़ी एलिफेंट गला ओके जैनिज्म खंडगिरी एंड उदयगिरी okay dating 1st century BC right next these caves feature extensive panels Khandagiri and Udayagiri caves okay these caves feature extensive panels depicting legends religious ceremonies and figures of human and animals and figures of humans and animals showcasing the depth of narrative in Jaina art showcasing the depth of narrative in Jaina art okay continue Jain Tirthankaras and Sasana Devas, Jain Tirthankaras and Sasana Devas are prominently displayed in these caves. Are prominently displayed in these caves. Okay. Next point. Post Kharavela reign, there would have some Jain contribution of Jainism. Okay. Post Kharavela's reign, Jainism faced a decline. Jainism faced a decline. But saw a resurgence during the Somavamsi rule. But saw a resurgence during the Somavamsi rule. With creation of Tara temples, with the creation of Tara temples and sculptures of Jaina deities like Rishabhanath and Mahavira. Like Rishabhanath and Mahavira. এটা হলো influence of Jainism এবং Buddhism কি আছে already ଗୋଟେ point ଆମେ ଦେଇ ଦେଇଛୁ କି earliest এটা Haudi elephant ଟା ଥିଲା okay next Buddhist sculptures indicate a progression next point এটা Buddhism উপর Buddhist sculptures indicate a progression from Emperor Ashoka's era embracing Mahayana and later Vajrayana Buddhism. Embracing Mahayana and later Vajrayana Buddhism. Okay. So Buddhism continue. The monasteries of Lalitgiri, Udayagiri and Ratnagiri became the focal points of Buddhist art. The monasteries of Lalitgiri, Udayagiri and Ratnagiri became the focal points of Buddhist art, housing stupas, monasteries, and numerous Buddha and Bodhisattva images. Housing stupas, monasteries, and numerous Buddha and Bodhisattva images. So Odisha रे जो Buddhist art टा अच्छी, how it is different? Okay, तारा speciality कौन? So take down next point.
Odisha's Buddhist art is distinguished by को underline करो. Odisha's Buddhist art is distinguished by depictions of Bodhisattva, depiction of Bodhisattva, Avalokiteshvara, AVA, LOKITESWARA, Avalokiteshvara, AVA, LOKITESWARA, in various forms such as Padmapani and Lokeshwara. In various forms such as Padmapani and Lokeshwara. Next point. A various range of, not various, diverse, a diverse range of, so एटा गोटे गला अपना महायाना, okay, Buddhism. Vajrayana Buddhism because तांकर जेतु सेटा तांत्रिक Buddhism थिला, तांकर motives थोड़ा different थिले. Diverse range of Vajrayana sculptures, including deities like Manjushri, Tara, and Mahakala, including deities like Manjushri, Tara, and Mahakala, were found particularly at Ratnagiri, Lalitgiri, and Udayagiri. Were found particularly at Ratnagiri, Lalitgiri, and Udayagiri. एटा वाला बुद्धिस्ट कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स मार्क करी खाली बुद्धिज्म ऊपर पढ़ना सेटा भी हमें लिख परिवे. ओके, एबे आसिला हिंदुइज्म. Next point. The Hindu faith dominates the bulk of Odishan sculptural art. The Hindu faith dominates the bulk of Odishan sculptural art. With sculptures representing Shivism, Vaishnavism, and Shaktism. With sculptures representing Shivism, Vaishnavism, and Shaktism prevalent throughout the region. Prevalent throughout the region. So, say tinta, okay, sects sudah underline कर दियो तो Shivism, Vaishnavism, and Shaktism. तारा को टोटे examples दे दो. Next point. Iconography related to Shakti worship. Iconography related to Shakti worship includes images of Saptamatrika, Chamunda, and Durga. Saptamatrika, Chamunda, and Durga. Shakti worship. And then Chausati Yogini culture is also there. With Yogini sculptures, found at Hirapur and Ranipur, Jarial. এটা গলা Shakti worship. তারপরে next, the Konark temple stands out for its intricate sculptures. The Konark temple stands out for its intricate sculptures, including the Surya deity,
decorative figures. Okay, giraffe, सेगुड़ा भी अच्छी, right? कहीं ना giraffe टा सेट तवड़े हमारा एठिकर तो animal नथिला. War elephants, horse, monarch horse is very famous. Huge. Decorative figures and social senses and social scenes, sorry, and social scenes reflecting the ethos of the time. Reflecting the ethos of the time. Okay. Say pointer lekhantu. It is also known for its erotic sculptures. It is also known for its erotic sculptures. Next point, last point. Zenith of Odishan sculptural art. The zenith, the highest point. The zenith of Odishan sculptural art was during the Ganga period, after which it experienced a gradual decline. After which it experienced a gradual decline. Okay, now conclusion. Odisha's cultural heritage Odisha's cultural heritage is a rich tapestry. Tapestry is a rich tapestry. Tapestry मैंने कौन पहले? Cloth. Okay, जोड़ा की गुड़ा है जोड़ा kind of cloth. Okay, rich tapestry that narrates the evolution of religious and cultural dynamism. So religious or cultural dynamism set underline that narrates the evolution of religious and cultural dynamism through its ancient to medieval periods, offering a visual feast of artistry and iconography. Offering a visual feast of artistry and iconography. Okay, so this is basically your sculptural art in Odisha, sculptures. Tapore next time chiba paintings. Paintings of Odisha. So paintings of Odisha re तीन चारटा question अच्छी because there are divisions जदि हमें करिवा. So you can take down first the divisions or the types of paintings in Odisha. Number one, okay, rural folk paintings. जोड़ा कि basically अपन देखिए गांव को गले सेठी घरे, okay, किंदा कोटिया ड्रे, ठीक है जी, जो painting गुड़ा करा पे. ताकू rural folk painting हमें बोलते. Number one, first category of Odishan painting. Second category, जोड़ा कि बहुत important और सेटा रो question आसी परे, that is tribal paintings. Second, okay, second है tribal painting. Third है mural painting. कांथर रे जोड़ा है ते बड़ा painting गुड़ा mural paintings. Number three, okay. तापर आसिला traditional paintings. जोड़ा कि mainly हमें पट्टचित्र बोली कहवा. Traditional paintings. Okay, example, सब बड़ा example पट्टचित्र अलगा भी अच्छी. Okay, apart from पट्टचित्र, but mainly हमें पट्टचित्र टा ही देखिए. Traditional paintings. Okay. Then some other traditional paintings we like that, but most famous are Pottery. Now, number 5,
hela modern art. This is also RU question as well, modern art in Odisha. Okay, को माने important artists होते हैं, को ऊपर से माने काम करते हैं. Okay, so next hela modern art. मतलब पांचटा category रे Odishan paintings को हमें divide कर पाएगा. एबे let's say मतलब 10 mark question पढ़ना. Okay, write a short note about Odishan painting. ताले 18 फॉर्म करेंगे. ताले मतलब first टा देखिए पड़े पांचटा टाइप लो हमें. तापरे सबुरो दी तीनटा की गोड़ दीटा important point देखिए दोबारा. किंबा particular question में ऐसे कर tribal paintings ऊपर 10 मार्क में देखो. So different tribes रो different paintings होती. Okay, different tribes करो different paintings होती. तो सेटा पूरी हमको देखिए पड़ेगा सर. Okay, so this part we will do tomorrow. Kali हमें ऐसा रखना. Kali offline classes off होंगी Wednesday. Okay, so we'll have an extended session. ठीक है. Extended session what we can keep it like let's say 6 p.m. to okay 9 p.m. पर्यंत रखिदा. Okay, I'll let you know. Kana kali offline classes both at category में होंगी. Okay, और kali ये sir भी नाम थी. Papa sir also will be unavailable tomorrow, so we'll take a 3-hour class 6 p.m. to 9 p.m. ताले कौन ना हमें paintings complete करीबा, dance forms complete कर देगा. Okay, है ना relatively we need to finish it by let's say December last, so that from January हमें तो revision पूरी start करें. अपन इतनी बात होती नहीं, और डाकी देनी, अपन थोड़े लिखी देने, तो sorry गला बात नहीं. तारा पूरी कोटे इतनी test उड़ा दबा आगुरु, अपन को 80 live test दबे पड़े. Okay, because once I finish it, go around sorry gala, you have the notes with you. So आप लोगों को content रही गला. Okay, so we decide कि हाँ आज ही हमें dance forms एटा आ ऊपर test होगा. तो आप लोग पढ़ी कैसे सेटा? I'll give you 2-3 questions. Okay, जो बेटी अलग type of question थी ना, but content है यही वाली. And you will write it. Okay, live. 7 minutes दिया ना, ताकि तरह पढ़े इतनी. But for that we have to first finish the book. You should have your running notes ready. Running notes आप लोगों को ready मतलब. Okay. So last 5 minutes. Any doubts? Any other thing that you want to ask? You can ask. More पिला जो मैंने अच्छी. Okay. You don't WhatsApp पर चली. See, if you want, you can follow it. आपनों करो detailed classes रहेगा. Okay. This class is basically for those students who will be giving the mains, okay, in March. Like in a dictation style of पढ़ा मुझे भल लगे नहीं कि मुझे करे नहीं, but mains जो मैंने लिखी है तांकु लिखिबा पाई पड़ेगा. They have to write. Okay, so that is the reason I am dictating and I want you to write it. Okay, if you are preparing for next year or आप आगु prepare करते हैं तो आपनों करो सेटा अलगा theory classes से. Okay, ये वाला cover. This is specifically for mains. Okay, आउ जदि आपण आगु भी mains देबे एबे टू practice करिया पे चाहउछथि. Okay, writing speed बढ़ाया पे चाहउछ. आज तो मु टिके slow रे डाकिली, but आस्ते आस्ते classes जत्ता बळे okay आपण करो आगु को जिबा तो speed ता आस्ते आस्ते बढ़ी. ठीक है. Anyway, any doubts, anything you would like to ask, then you can ask. Else we will stop. सर आज रो क्लास टा को टिके अपलोड कर देबे. हाँ, क्लास आप अपन करो ये रे ऐप रे अपलोड ही दिबो राइट. क्लास का ऐप रे अपलोड ही दिबो. ये सब दिन क्लास अपन सर आज ए जियो की आज काली नो क्लास पूरा अपलोड ही जाई. इवन आज सकाळ रो क्लास भी अपलोड ही जाई राइट. पॉलिटी और ज्योग्राफी सर ओवरलैपिंग रहउची क्लासेस गुडा को. हाँ हाँ नहीं सेटा टिके सॉल्व कला भलो. ओवरलैपिंग जो क्लासेस रहउची, ओवरलैपिंग डिफरेंट बैचेस रहउची. फॉर एग्जांपल लेट्स से इकोनॉमिक्स क्लास टा सेटा मेंस बैच रो नो, सेटा इंटीग्रेटेड बैच कुछ परसेंट. तेणु आपण गोटे बैच को धरंतु जो माने लेट्स से 50 प्लस रखुचंती. ओके, प्रीलिम्स रे और एथर को बहुत भलो चांसेस अछि कि आपण देबे. ताले आपण मेंस बैच ऊपर कंसंट्रेट करू. एनीवे से जो भी बैच होची सब गुडा तो अपलोड होची. ठीक अछि. तो आपण सेही पॉइंट ऑफ व्यू को देखि कि
right? So that we will see. Tomorrow there will be Kali class American Kali 50th. Kali भी ଗୋଟେ substantial portion ସରିଯିବ सर pending अभी जो ସରିଯିବ तार कुछ पीडीएफ जो कि हमको ग्रुप्स रे PDFs नहीं आर अलगा सर माने आज जो नोट प्रिंटेड मटेरियल मिलिबो हां प्रिंटेड मटेरियल आपनको मिलिबो से मटेरियल टा एक्जेक्टली वो साइड आपको से सेटा रेडी हो गलानी कि हां से 15th अराउंड आसीबो ठीक है ମୁଁ କହିବି जेटा आसीबो बट आपण लिखि देबे बेटर ओके ओके सर आपण लिखि देबे दियडो आपनको रनिंग नोट्स के रेडी हे गला प्लस किछटा एक्स्ट्रा जिंस मु एटी क्लास रे कहूची ओके 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 फाइन